So, welcome to the day two. So, talk about the you can say Power BI prospect. So, let's we have the begin with the today Power BI introduction tab, data set, and upload advanced transformation query. So, we are going to cover the basic transformation that how to transform the data. So, let's open the first Power BI so that you can have idea into it. Oh, I have already. Don't worry. And I tell you what is that how to transform. So okay, remember it one thing that always use the small data set so that you can have idea कि data में क्या चल रहा है, that you must understand before going to do anything. क्योंकि if you pick up the large data set, okay, the problem is that you hard to understand that what data asking and what you are preparing. So this part you must aware about that. Okay. Okay, where did you get this data? Once you open the fresh Power BI, here you will be able to see the simple data. So you click and load this data. Simple, you can get it. But I am going to do from the beginning. Since I have to tell you that how should we install. So I would request never use directly any data set. Okay. So what you need to do, go to the parameter first part, type whatever source you have. So type Excel data. And the location prospects, so we must pass the value here. So let me check where the financial simple is. So this here we have. So then type /F financial simple, control A, control C. In my system it will work, but in your system doesn't work. So what you need to do, you can just change this, you can say location by clicking manage parameter, and you can just explore it. Okay, and you paste there any value. You can use tax as well. The tax, and then you can paste here. Don't worry, it will work. And then press OK. So what happened? Your data source got changed. So come to the here, and instead of passing the location name directly, I am going to change my parameter. So like suppose why I'm using parameter, your question why I'm going to use the, we can say parameter instead of using the, you can say direct location. The problem is that I'm using one Excel, okay, but if suppose if I created the 25, 35, 60 data sets, so is this possible to change 60 times in the report? So to save the time, you must create the parameter. This is my request, okay, and then now I have to, we can say update your source by clicking source here. You can pass the parameter, and still in case wanted to pass the path, then you can select here and paste the path as well. So still you can do that, but I'm going to use the parameter Excel data. Press OK and change it. Any doubt here? No sir. Now going to use the SQL. Very, very important and very crucial. Remember it. So at the first step, we always go to the manage parameters, right? Yes, first part. Okay. Why I'm saying, because suppose no one has a single data set, everyone have more than 2 data set and every time we're going to okay, we are working as a consultant, so not possible to give the all access to us. They just give the maybe backup the data. Sometimes they give the live, they create a separate for, like suppose your employee table, they never give the access. They give the old 2-year 3-year old data, they give the location and everything is same structure. They give the backup file to you. So using backup table, you will build the report, but if you have created the parameter, then definitely it will going to help you by a last user which you're going to update. So make sure whatever you're going to do. So for your prospect, in future wanted to change the location of the Excel. So are you going to change the each, you can say data set? Does not sounds good as per my understanding. So you must follow the, you can say professional, you must have the professional way so that you can
we can follow that professional way so that user next time user member come in system, they can check and they can update it. Remember, few people have a thought that if I share my knowledge, I will lose my this capability. No, I'm saying honestly, when I started initial page, I had this kind of understanding, but when I start sharing the knowledge, few months, realize in few months that what kind of benefit I will get it. Okay, so let's, if I select wanted to pass, check the server name, so we can just type server name and select double underscore, sorry, add that and type server name, and then you can copy it. If you're not able to copy it, go to the here and property and copy here. So this is the server name that I have. Okay, talk about the, come to the here, transform data. I told you use parameter, but I'm not going to use the parameter first. I'm creating parameter, but I'm not going to use it. So first pass the server name. Server name or instance name, a server location, everything is same. Remember it. I told you. I told you in first class. Okay? Now people went to and then DB name. Since you are aware about it little bit, so DB name, database name. So we have database name which is adventure workbench, but it's optional. It's not mandatory, but I just keep it in. Okay, I don't want to use the we can say database name. Just I wanted to pass the server name. Server or what? Service name is server name. Yeah, this is server name. Copy it and pass it. There are two options to able to see the import and direct query. So first we will see the import part. I haven't entered the, you can say database name. Let's pass it. See this, we will see the all database here, and as well we will be able to see the all table as well for all things. But do you think is this good? No. Why? Because it's going to cover the lot of pieces that we don't like it. So why should I not you can say control it? So only information that are needed that I'm going to pass you. So go to the SQL part and pass it here, then pass the server name. But biggest problem, I forgot the server name and database name. Not possible to remember every time. Okay, but let me do it. Still I'm getting the one server name. See this. Rest I doesn't see that. Okay, now I want that only one table to take it, production table, and I want related table too. So select related tables. Okay, see this. These are table related to. I'm not going to select anything because I want to see the next part. So next SQL server. Okay, I wanted to pass parameter server name. I wanted to pass the DB name. That I'm only passing manually. I'm going to pass by the parameter. Same thing, nothing is different. Okay, and now this time I wanted to pass the SQL query. So let's write the SQL query in query here. Remove it. Start from in table, pick up that email ID. Let's pass it here. Okay, running. I don't want to include the relationship column. Why? Because it is going to take a lot of space and check that. See this. Encounter error, failure select query is not approved. Retry. Why is saying? Because my system is not encrypted. So that reason I'm getting the error. Okay, so let's do it by this way. Manage parameter server name. Encryption is required for the database. Import. Pick up anyone, don't worry. And now come here and keep as it is, pass the query. If your system, obviously a company database, you can say already encrypted, so you never get this problem. Okay,
Now see this. Data has been governed by using SQL. So this way you can, there are multiple way I told you can use it. Whatever problem you have, you can solve it. Next part is that next we have the multiple files, notepad. So I suppose I have a Power BI 6 day 6, this folder I wanted to use it. And you have suppose 200 Excel file with the same format. So how to export that? So let me show you by using uh, different way. Power BI, new VSTM. See this. Here I have multiple files, okay? And I want you to see the all files here. And multiple format we have, it's not just one format. So come to the here, go to the more menu. I'm just going to give the idea that how should you connect that, then after we'll move to the next part. Don't, I know it's look like a boring, but yeah, when you start then you are not able to answer it serious. We have too many data sets, but yeah, different structure we have right now. But what you see that we have a binary, we have a CSV, we have the JSON file, we have the PBX, we have multiple files we have. So if multiple, there is one condition is required to combine and merge transform data. Why? Because each table may be different format file, doesn't matter, but each table has the same information, means same column, same rows, so sorry, same column must be available, then you will to combine and merge it, otherwise you won't, and you won't get can say correct data. But meanwhile, let's combine and transform. Say this. Obviously we have a notepad, so notepad is different objects, different query, so that is going to use say this. Automatically create with the Power BI. It creates the parameter, it will create the simple file. Say this, pick up CSV here, transform your file to show the all data. But data obviously is not as intended, but yeah, at least given HTML file directly imported that, see this way. But yeah, at least imported. We have multiple file PBX, multiple file we have, but still did it. So what I'm trying to say that use any of the source by using folder, but must format should be same. But here we don't have format, is still uploaded that. Okay. So same way that give the idea any sources which you have. Okay, we have many SQL Server analysis services. Like suppose we have a huge data. Excuse me, sir. Yeah, please. So just scroll back, just go back to your folder again, Okay. where we have extract the data. This one. So, okay, all are some are JSON files, some are JPG files. So we can combine it all together, but the condition is all the columns should be the same. Same. Okay. And obviously a PDF is not possible to give the column. And HTML, other files, this is not a file, this is a PBX file. JSON has a data connector is also PBX file, so it doesn't matter. Image, what kind of data? Image, nothing, but at least I have Nothing. export that. Yeah, Okay. still we have export that. So my object to tell you that if you have folder in about 200 files, maybe Excel, maybe PBX, whatever it is, but must have the column should be same. Why I'm saying column should be same? Reason is that Power BI has a case sensitive column. If you type the small letter and the type the, we can say capital letter, then consider Okay. different Uppercase and values. lowercase. Huh. If even Okay. like suppose I'll tell you a great story. I asked many candidates while interview that the question is that I have employee table exported in the Power BI. I using that report past 2 years. It was working fine. Today morning I saw that this report is not working. Once I opened that, I saw employee name is missing in the table, and it says employee name doesn't exist in the model employee table. When I check in the database, column exists. Still I'm able to see in Power BI query editor 2 and here. Why Power BI is saying this value is not appear? They are not able to answer. The single line answer is that Power BI is a case sensitive, might has a space, or maybe character is, we can say character is changing, might be capital to small, other don't have any reason behind it. Okay, because Okay.
doesn't exist, but the column value, column name is not found. Mhm. Two reasons. Maybe after that we have space, which I never see that. Are you agree with that point? Because I never see the space. Yes, sir. So to make sure these kind of things can happen in interview. Okay. So any doubt that you wanted to ask so that I can move next part? No doubt. Okay. No doubt, sir. I'll do practice for this one, like Now do more to practice, not practice, do manage more parameters practice. and. Mhm. Do more Okay. practice. Use correct word. Mhm. Okay. You don't have to install database and all. Okay. I'll give the link. Okay. Using this link, you can build the whatever model you want, test report, test it. Maximum trying to build the dashboard. And you don't have to hesitate. Okay. Now, Sure, sir. I'm going to use ODBC feed. This is the North Wind data set, okay? And let me share you this link in your file, in that folder, so that you have idea. Don't use it. Power BI links and Power BI data link, okay? This is the you can say North Wind data set. It has all model HR, sales, operations, so you can use and build. Try to use maximum data set as much as possible. The two links that we haven't mentioned, let me pass it out. Workspace role in Power BI. Okay, you can use this one. Right now, I know you are a new. Once you are mature, then you can easily find out. You don't need my help. I know that, but yeah, this beginning stage you need it. And second one, what I give to you, uh, oh, workspace report 1000 years. Second one, workspace on member access that I told given to you. Second, what I told you, that I'll give the link to you. Okay, just remember, then I'll give it to you. So here I say this, using this, let's copy this. This will work on ODBC data feed, okay? ODBC, OD data. Yeah. This one is, let me select O data feed, okay? O data feed. It's a kind So of, by the way, what is OData feed? I do it's not a heard kind it. of JSON file. Okay, JSON files. Okay. Yeah, it's kind of, you can say. It has you can create the large data set in this, and it will compress the data in less than MB. 2 GB side when we come to the 200 MB. That is the great feature it has. And see this, all models is appearing. So now select anyone. I want to select the customer and select related table, and that's okay. I'm just giving idea how to use it, okay? If this file I keep it in your folder, I'll create a press for modification. Okay, sir. Then we have the Excel, I told you, database I given to you. Then we have the another file which is Dave. Where is the SharePoint? SharePoint. I have everything. SharePoint. And SharePoint has a specific way to do that. That you keep an eyes closely. Outlook for implement. Select from
No, it doesn't need that. Oh, it's my personal account, so that reason it doesn't appear. Let's see. I am saying that SharePoint is not coming. SharePoint. Okay, SharePoint we have the training data set. Financial sample. Okay, and then file SharePoint have two objects, folder and list, but I'm going to give you idea that how should I use it. So once you're done, once you open the PBX and sorry Excel file in the you can say in the SharePoint, then what you need to do, just go to the edit option. There is option open in desktop app, click on that, okay, and wait for to open. It will open at your desktop. Then go to the file, info, and copy file location and come to the notepad. Type notepad and paste here. See this, we have the this option must be removed before going to paste it. So I'm going to use all link and prepare it. Let's see what happens if I'm not going to remove it. Use Wave. Instead of SharePoint, use Wave. And since my organization account, so I have to use organization. If we allow you to use anyone, then you can use it. Otherwise, you must pass the credential. Because it's organization, so definitely I need to pass the organization credential. So connected it and pick up this one. Connect. Say this, I'm getting the error just because this wave one. So let's cancel it. And I'm going to copy from here till there. So this one I'm going to copy. It's not just here, everybody got this problem. So make sure that. I'm looking for the one error that I can tell you at least, forbidden error. Should become, please come. Oh, loading. Okay, see this. This is the financial simple. No, sheet one, I'm going to load that. Financial simple we have already. So this way we can connect the SharePoint. Any doubt? No, sir. Open. Remember, just open the Excel file. Open desktop version. Then go to the file info. Everywhere you file info. Copy the path location. And thereafter paste in the notepad, remove this part and then paste this link to the Power BI wave option. Here I have wave. Do not paste in SharePoint, wave, and then you can use it. Yes, sir. Okay, so I think the major that we are using, that I cover that. Okay, so you can try it yourself. We have a 100+ data set. If I'm going to cover, it will take a month nearby. And also I don't have all data types. It's a simple thing. If a database, if you still have Azure, okay, so Azure have a database too, like tell you, see this how Azure SQL database, click on that, Azure Synapse, click on that, Azure NLC services, click on that, all wall, Azure table storage, all thing available here, Azure part. Online services, we have the all option available here. Other we have to see this, these are the option available. Let's talk about ODBC. You have a data set, okay, and I wanted to connect with that database, not able to connect that, then create a string, connection string and build using ODBC. You can connect any database. And what is the connection string? So go to the Google, type connection string. Website, okay. See this, it has a many type of connections string. Previously, when Power BI is new, we are using this website very you can say it was very useful. So see this, server stand for server name, database name, just update your detail and use in that, okay. So that going to help on ODBC part. So we see where is the ODBC. Skip parameter.
say this ODBC. This is we have the ODBC. You can correct this. Just refresh. You can say replace the username, password, and database name. This kind of replace it and use it. Okay. Many ODBC, local, 64-bit machine, remote database, everything we available in ODBC. So you can use it. Still ODBC. Next, talk about the I have, which is last one, which I have to tell you. XAMPP, PHP admin server. Actually, this one no one will tell you, so just requires some time. So my admin is it's kind of server like website usually use the PHP admin. So let's start the Apache. Let's start the MySQL server, and then go to the admin access. Click on that. Let's load the Excel file. We will get a lot of issues unnecessary, taking a lot of space. Okay, we'll do it later on. Okay, this is my, you can say, local host PHP admin. Now I wanted to connect my we can say Power BI. So how should I import data from in Power BI using my PHP admin? So I have a detailed video on it. Still you can watch it. You can hear, see this. OLEDB. No, I think ODBC will work. Let me check. And here we have the wait 1 second. Other OLEDB. I need to pass the connection string. Connection string, which is server name. If not, will use okay. Then use the MySQL server. Here it is. MySQL. Yes. Click on that. Okay. And pass the server name. Press OK. Put the database name DFL. Pass it. Okay. And use my window credential. Select this one, connect, and press OK. Authentication, provide the root. And here, see this. I have just insert the data testing purpose. I inserted the data few lines. See, let me show you. Database name, customer. What is the customer database? Click on that and customer. You see this. This is the table. I inserted manually few lines for testing purpose only. Okay. So see this. I data appear here. Click OK. But remember, for these two things required. One is that XAMPP. If you want to write down, please write down XAMPP and MySQL ODBC. ODBC connector must install in your system. Then you will able to connect that. MySQL. See this. This is MySQL workbench. Even you can use this on MySQL workbench too. I already connected that. This is the demo, or you can say database. Connected here. But this is the MySQL, not SQL. This is the MySQL icon. This is called workbench. Like this is the you can say SQL server. We say Management Studio. Here we can say MySQL. We can say
workbench that I store it already, everything. Still you can use this one too. And also I have connected this one here. Let me show you. Go to the home tab and see this. System tables. Where is mine one? No, it's not configured. Continue anyway. Yes, BFL database and table. See this. Select 1000 limit. See this. We have a data here. So many way we can do that by connection. Just build the connection and you can use it. Mini data set. Okay. Ultimate object connection, make connections. We can do that. For MySQL will be same concept. Go to the here. And many database we can say 100 plus sources available, you can use it. Source. MySQL. MySQL we have. Even a Oracle database, so all database we have here. Okay, so you can use and build it. Today almost I cover the source point. Okay, next class we'll cover the transformation. Okay, so now let close and apply and save it so that we can move to the next part. And this file is available in your, you can say, available in your folder. You can download, stock somewhere, test it, let me know any problem. Please focus on maximum part that I told you. What happened if you're not aware, in people going to ask different kind of question and you will be scared in interview. So that's request, follow it as it is that I told you. Okay, sir. That's sufficient for you, don't worry. And question program here. Okay, so now let me stop it. Stop. This is Apache. You can say XAMPP or Apache. You can say that. Okay. Let's copy as a both example. Where's the SharePoint? This is the basic things. What happened after a few months? You forgot it. Actually, in office, you did not use everything. Why I remember? Because we can say I'm using everything training. Okay. I'm using database. I'm in office. I use the MarineDB, MySQL, SQL, Azure, AWS. I'm using everything, but I'm not using Excel and SharePoint. Hardly I use in I think one report that I use Excel. Otherwise, everything linked with that. Okay. Close it. Today we have covered many things. This one we have covered that. Oh, we have covered. Let's move to this part. Okay, so we have SQL operators like operator. Okay, let me delete that and save as the day2. Now, few example early set it in your sets in your, you can say, file. So let's create the manually first. Start with the database, okay? And I'm going to cover the w3school.com. Basic is fine. So let's start with the database prospect. Few things that we need it to make you understand how to create the database. Okay, so to create the database,
create the database, must we can say create the fresh DB. So I don't want to change the main model. I can create the fresh one. So here I have a new database. Okay, either create new here and pass the name. So test DB. Okay, and group access and perfect. Okay. So now give the test owner name. Just pass the whosoever is. So here my system name is test. Sorry, talk admin. Services. Let's see this. Correct input to search again. So here we get the default access. Whosoever owner is, usually company has the directory. So you can for the directory you can click by clicking here for the directory. But find the particular name of the person and then you can assign them if you need to individual assignment. So click OK. Manually I created the database, but I wanted to create database using SQL query. So create database and give the name DFL database. Okay, so I created that. Is this completed? But I'm not able to see that. Let's refresh it. Now created the DFL database, but we don't have the table and all. See this, nothing we have here, like here does available. So now I wanted to first, I added that, I wanted to delete database, drop database, give the name test DB. I drop it, I don't know, it's still appearing. So is this available now? No, it's deleted. So same way we can create and delete, create and delete. If I paste it here, say this. So if I drop, so must type here. So if I type the create database, it will create, drop and create. Again, if I type the drop here, then delete it. So it should be continue. You can give any name. Database create drop. Why is give the error? Because it not created. So let's run everything together. Already exists. BFL it already exists. It give the error. Yes. So refresh it. So nothing is appeared. All data was deleted successfully. So just I'm saving it for your reference purpose. I did not remove anything. Okay, sir. Perfect. Next database I created the net. I wanted to add the table's name. How to do that? So the table must drop table created. Backup part you must learn it. Backup part I'm not going to tell you. This is the database part. Let's create the table prospect. So table have create table, table name, data type and column. Okay. So create table. Give the name of table customer. Customer exists. Okay, not here. Let me create the one database first. BFL database. Okay, let's run it. Wow, perfect. And use BFL database so that we have the create customer table. Created, yes, perfect. Let's click on use. So see, this is here appear, and now create table. I need to give the column name. So the column name I wanted to see. Tell me the ID.
not null, and it should be integer. Integer. Right. Correct. Yes, sir. Next we have the Name. name. Yes, name. Obviously, varchar max. Where? Max. So it should not be not null because name is required. Without name, we cannot create the IDs. Why screen? Okay. Address. Address. It should be varchar max. Varchar max is null. Null. Yeah, null is fine. Next, I want to remember. Okay, last name, first name, whatever it is, just create that. Let's pass this one. Is it right? So I'm keeping as it is. So this way you can write it, but let me paste here and create table. Then we have run it. Use vehicle table. Whatever table you selected, it will automatically create into it. Okay, if I run twice, then what happened? It will give the error. Okay, see this. It will already exist, the person name. Now, I wanted to pass few name, address, worker, and city with the condition so that I can create this one too. I've given a lot of effort here. Why should I leave them? Where customer can be null, remove it, and then close the bracket. We have given a lot of effort here. Why should I not put that? City. नहीं create हुआ. Let's check, refresh it, and see what our table has been created. Perfect. TBO and customer percent created, correct? Yes, sir. Perfect. Now, I wanted to insert data into it. How should I do that? So instead of wasting time, already created the, we can say, in your folder I created it so that we won't take much time, but I'll give idea how should I do that. So let's comment it. But yeah, the training which I'm giving to you, follow the same rule. Why? Because you don't delete option, forget about delete, no option. I'll train you, but don't use delete in future. Sure, sir. Delete. Okay, I just created it for your reference. Adventure workbench. Let me show you. Employee table, I created that. See this, I created it, okay, for your reference. And it has the same way I created the employee ID, employee name, solely for a testing purpose only, and I need it in future. That is generated. So what happened that we have a 10,000 rows, okay, and we wanted to insert in the database. What should we do? Are you going to create the each SQL query by sequence, and then you're going to add it? Is this way to do that? No. So what you need to do? You come to the Excel. Don't forget Excel is required, okay? Okay, add the new Excel file, okay, maybe save it, I don't care. And whatever data you have, okay, you can pass in you can paste in your database or maybe Excel. So I am going to pass any data here. So I'll give idea how should I prepare it. Okay, like suppose we have the serial number and maybe ID, we have a name, we have
anything you can say location. I'll give idea how to insert the data. So suppose I have ID 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I'm going to use it only 6 rows so that we can have a do practice more, and my name is going to this. Perfect. Give the series and then GGN Noida Delhi, GGN Noida Delhi. Perfect. This data I have, okay, I wanted to insert in, you can say insert into the database, but suppose it has a 20,000 1 lakh row. So what should I do? Should I enter the manually? No, there is a rule of it. We must create the SQL query for it. The SQL query which is called insert into. You must insert data by using this statement. Okay, drop table, alter table, that I not tell you. Okay, drop, I'll tell you, don't worry. So insert into, how to insert data in the, actually I'm scared about creating this, so I'll give it to you. Idea that how should I do that. Insert into, by using insert into, you can update data in the, you can say database. So to this, what you need to do, you just write the query first. So I just write insert into table name and column name. Okay, then pass the value. So till here is a constant thing in the SQL. So what I need to do, I just come here and write down here the constant part only. So what I need to do, I come here, I select this one. Okay, here I have a constant and then press F4 so that, sorry, what is it, I4, it should be I4. Why is I4? Now see this value is coming, but if I drag it, see this, it will display blank. Why? Because here two values are blank, then you pick up this one. If I remove this one, it will display blank. So how should I fix this situation? To fix this, use F4. This is a referencing concept in the Reference. yeah, a refresh concept in it. You hope about that. Okay. This is the absolute reference. Absolutely, perfect. So then we have the we did it here. Next part, we need to pass the value. So see this, we have already opened the bracket and I want to give the one space, and then number is not required, we can say comma, single statement comma. So we just give the one space here and then and pass the first value because it's integer. Next, we know that we need to use and, then give the one space. Thereafter we use the comma. No, not this one. Give the comma here, and then we have the we can say single comma, then and pass the second value, and then we have the same thing here, 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 and then this way you can create the statements. I added that 1 and 2 I added successfully because when you enter it, see this required this way. Same way all I did it to save the time. Okay, so one thing you have to do, you create the one line insert data so that you will test is this working or not. Once works successfully, insert all data into one sequence by running it. So let me show you. Salary is not a correct option here. Let's come to here. Change the column name, which is salary. Okay. And now we have to run it. Invalid object. Oh, I have selected the VFL dataset to use. Use this dataset. Okay. And now running, we see this effect has been affected the all rows. Now I wanted to clean it up. So let me show you that what the result is coming. Select
फ्रॉम, बहुत तेज तो नहीं हूँ ना मैं, मेरी गंदी आदत पड़ गई, कंटिन्यू हो जाता तो कंटिन्यू हो जाता हूँ। नहीं 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 सर, सही है, कोई, ये इजी है। इंसर्ट ये तो आता है मेरे को। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो इतना समझ गए बस। मैं देखो, मेरा काम डेटाबेस करना, मेरा काम बताना, थोड़ा थोड़ा आइडिया, मैं स्किल पार्ट पे आऊँगा, बट ये बेसिक चीज़ें नहीं कवर करूँ तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो हम्म। दैट्स आइडिया। ट्रंकेट, डिलीट, ड्रॉप, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज दैट ट्रंकेट। सर इस पार्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे आता है वैसे भी। चलो तब ठीक है, लेट रिमूव इट, लेट्स कम टू द एसक्यूएल क्वेरी देन। हाँ सर, वो ये सब बहुत, ये मेरे को लगता भी नहीं है सर, हमसे कोई पूछेगा भी नहीं इंटरव्यूज में, और ये नहीं मेरे को ऐसा लगता नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, डेटाबेस पे ना जब प्रॉब्लम आ जाएगी कभी भी, तो करना भी पड़ सकता है और पूछा भी जाएगा आपसे, ऐसा नहीं है। तो मान लो कि अगर इतनी बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी आप नहीं मानोगे, पैकेज बनाना पड़ता है, एसक्यूएल का पैकेज बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे, कहीं गलत है। बना लेकिन बनाओ। तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं बनाओ, ये काम ही एकदम लिंक है, पावर बी आई डेटाबेस दोनों लिंक है। मुझे तो लगता है कि 60% पार्ट, अब तो देखा जाए तो पावर बी आई में वो सारी चीज़ें कर सकते हो आप जो एसक्यूएल में कर सकते हो। इवन जो डेटा आप मैंने दिखाया था, डेटा आपके थ्रू आप एसक्यूएल में आके यहाँ पे यूजर आई डी पासवर्ड दो, वो चल जाएगा। यहाँ पे एसक्यूएल को लिखो, उसको पास कर दो, वहाँ पे यूज कर लो। पावर बी आई हम्म। डेटा सेट उसकी बात कर रहा हूँ, उसको यूज करके बना सकते हो आप। तो वो चीज़ें आनी चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं, चलो ठीक है, स्किप करते हैं। लेट्स सेव इट एंड क्लोज इट। आपके इसमें फाइल में है ऑलरेडी, आप जब चाहते यूज कर सकते हो। लेट्स सेव इट। चलो अब चलते हैं एसक्यूएल पे। एसक्यूएल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कर लेते हैं डे टू कहाँ गया। परफेक्ट। सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट, स्टार्ट फ्रॉम एनी टेबल, ओके, सेलेक्ट employee table. But remember it when you write the query, okay? You, one thing I missed always, even I miss it. Do you know what? Use सर function. यूज, सर सर अगर अगर हम ये यूज नहीं भी करें, और अगर जो एग्जीक्यूट के बगल में लेफ्ट में अगर हमने यहाँ पे डेटाबेस दे दिया, हाँ, यहाँ तो पे भी भी काम क्लिक हो कर, जाता है। हाँ अगर आपने क्लिक भी कर ले तो हो जाएगा वो। हम्म। बट not right now. When you got this problem, when you have multiple data set access, then that's the तब problem. प्रॉब्लम है सर। And also you're going to edit the data, just make sure you have checked the data set, that database that you're going to use is appear or not. So that is thing mandatory. Okay, now I want to use two, means say data wanted to double and triple it. So how to do that? By multiple way. So union and combine the data together. One condition is that all columns should be same. Why giving a duplicate value? Do you know why? सर यूनियन Hmm. ऑलवेज। You need always remove the duplicate value from the database. But यस सर। got it. You instead of using the union, I use something else. I'll tell you what. Say this. यूनियन ऑल। Hmm. What happened now? सर it will include all the data, it will multiply it. Multiply. Okay, so remember when we use it. Okay. Now this is good. No problem. I have a 2, 3, 4, 5 table. Okay, and I wanted to include in that. So there is a function CTE. Okay, and then union all जाएगी। ठीक। ये कैसे निकल रहा है? ऐसे लगाया है। with CT ना. ये ढक्कन। सर हमने एज नहीं लगाया, एज फिर ब्रैकेट्स S, लगाए। हाँ S के बाद ब्रैकेट होगा ना. हम्म। CT में कुछ गलत है. With CT as, एक मिनट.
select star from city. सर वो ब्रैकेट के बाद हम एलियास देते हैं ना इसमें सिटी में। हाँ आई थिंक सो, वो मिस कर रहा हूँ। ये ट्रांजेक्शन बेस्ड एसक्यूएल है, नहीं टी एसक्यूएल में आता है ये। With city as then bracket then select query then close the bracket then give the alias name उसके बाद कर देते हैं। So as city from, no, close the bracket तू भागेगी नहीं क्योंकि as city test रिटर्न का है और तूने क्या with column bracket open common table name. क्या किया इसमें? Cells with city. Okay. So with city as, then pass the query. Okay, give the name of query, correct? Okay. With the इसमें cells with cells person this one thing. Okay, define city expression name with the column list and then define city गलत करेंगे from cell city. Okay, let's type this way, cell city as, and then we have the select statement. We have closed the X, then डायरेक्टली सही है, इसमें क्या दिक्कत है? तो नीचे सेल साइज नहीं सर आपने select star from के बाद bracket लगा रखा है शायद आपने। स्क्रॉल डाउन करो सर। कहाँ लगा रखा है? ये वाला। अच्छा ये वाला लास्ट वाला, और ये select star from। अब यहाँ तक ठीक। अब यहाँ पे सब किया जाएगा select star select from city। डबल करते इसलिए नहीं चल रहा है। सिटी सही है। रन हो रहा है सही। तो चलो ये भी डेटा हमारा रन हो गया, सिटी वाला पार्ट। नेक्स्ट आते हैं टॉप सैलरी बॉटम सैलरी, वही है मतलब सारा आपने किया हुआ वाला है, करेक्ट? सर ये तो इंटरव्यू की तैयारी जब कर रहा था वो तब कर लिया था। टॉप कोई बात सैलरी नहीं। सब क्वेरी उसके थ्रू। ठीक है कोई नहीं, तो जब किया हुआ तो उसको क्या रिपीट करें। ठीक है आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वाला, सम वाला देख लेते हैं दो चार। मैं कुछ बेस्ट एग्जांपल बना लेता हूँ। और सर मेरे को जो कॉन्सेप्ट रखना है वो पीएल सीक्वल में रखना है, जैसे कि आता ना स्टोर प्रोसीजर्स, हाँ व्यूज, फंक्शंस, ट्रिगर्स। यार वो डेटाबेस में आता है, देखो वो चीज़ें डेटाबेस में होती है, ठीक है एसक्यूएल में नहीं आती है। बट आप कहोगे तो बनाना सिखा देंगे आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर प्रोसीजर में कुछ सिंपल, लेकिन हाँ इसमें है कि स्टोर प्रोसीजर के लिए वो मेरे पास उसमें मैंने पहले बोला कि इसका अलग ही चीज़ें होती हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो डेटाबेस पार्ट में आता है, इसमें नहीं पढ़ाते। ठीक है सर वो सीक्वल नहीं है, सीक्वल में नहीं आता, वो डेटाबेस में आता है। क्योंकि देखो स्टोर प्रोसीजर होता है डेटाबेस जो हम डेवलप करते हैं, तो उसमें हम स्टोर प्रोसीजर पास करते हैं किसके लिए, डेटा पिकअप करने, क्योंकि डेटा हमारे पास जो आएगा किसी सोर्स से आएगा। यानी सपोज करो मैं कोई वेबसाइट है, वहाँ पे मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ, यानी देखो डेटा तो किसी एप्लीकेशन से ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि ला के मैंने इंटर करेंगे डेटाबेस में। तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट के थ्रू डेटा इंटर करेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट ले लो, फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है वो तो जियोर है चाहे AWS है, बट डेटा कहाँ से आता है, उसकी वेबसाइट से। कस्टमर ऑर्डर देगा तभी तो डेटा जाएगा उनके पास, तो कैसे आएगा, वो स्टोर प्रोसीजर के थ्रू डेटा उठाएंगे, वहाँ से उठा कर टेबल में
फेंकते चले जाएंगे बाय कंडीशन पे, ताकि अब यहाँ पे सपोज करो मेरे पास, अब देखो यहाँ पे है तो इसमें भी आईडीएफ प्राइमरी की भी है और फॉरेन की भी है यहाँ पे। कैसे है, क्योंकि उन्होंने ट्रिगर कर रखा है टी एसक्यूएल के थ्रू। तो जब वो ट्रिगर करेंगे तो वो डेफिनेटली जितने भी टेबल होंगे सबके लिए उन्होंने कोड कर रखा है, ऑटोमेटिक वहाँ पर जाके आईडी ऐड हो जाएगी। नहीं तो हमें की कहाँ से मिलती इसकी। अब यहाँ पे अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट टाइप है, देखो की इसका यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट टाइप की हर जगह पास होगा इस टेबल में। क्यों है, क्योंकि हमने इसको वो क्या नाम उस की को पास कर रखा है, जगह जहाँ जहाँ रिकॉर्ड है वहाँ पास कर रखा है, ताकि इससे ये लिंक हो, उससे वो लिंक हो, उससे वो लिंक होगा और उसी से हमें डेटा मिलेगा। और कोई बात नहीं, तो ये तो ट्रिगर का अलग ही कॉन्सेप्ट है। बाकी देखो स्टोर प्रोसीजर के लिए कोई स्पेसिफिक नेम, बस सिंपल सा है क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, सेलेक्ट ऑल कस्टमर एंड सेलेक्ट एज दिस नेम। बट हाँ इसमें यह कि पैरामीटर पास करना होता है। अगर वो पैरामीटर नहीं पास करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ईच सेल्स पे यानी ईच रोज पे अलग अलग जो पैरामीटर उसके अकॉर्डिंग डेटा उठाना है। ऐसा तो है नहीं कि आपको जो डेटा मिलेगा वो आपको आपके फॉर्मेट मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। देखो डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर में और डेटा एनालिस्ट में यही डिफरेंस है, लोगों को समझना पड़ेगा। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है, बट डेटा इंजीनियर कहता है डेटा जनरेट करता है। यही डिफरेंस है दोनों, इसीलिए वो पाइथन आर यूज करते हैं, जावा डॉट इन ताकि डेटा को पुल कर सकें अपने फॉर्मेट में। बस यही डिफरेंस है दोनों में। और क्या अलग है बताओ, क्वेरी वही क्वेरी क्या अलग से। सर ये वाला तो, ये सब तो फिर मेरे को आता ही है ये तो सब। हाँ तो तब फिर पावर भी पढ़ते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आता है तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है तो। हाँ, फिर तो सर पावर भी यही पढ़ते हैं, ये तो मेरे को हाँ आता था ये सब तो। तो ये पढ़ इंसर्ट के और देखो, डीएमए ये मैंने तो सबको आता था। देखो मैंने पहले कहा था पावर बी के साथ हम स्कूल पढ़ाते थे। स्कूल उनके लिए बहुत है, ठीक है, जो मतलब जो इंटरव्यू के लिए आएंगे बंदे तो उनके लिए स्किल बहुत है। जितना मैंने पढ़ा है इसमें मुझे लगता है ना कि बंदे, हाँ उन्होंने शायद एसक्यूएल पढ़ा ही नहीं होगा शायद, मैंने तो हाँ एसक्यूएल पढ़ा हुआ है। तब तो उनके लिए सारी चीज़ें बहुत है, स्कूल फंक्शन पढ़ा देना बहुत होता है उनके लिए। हाँ ये तो बहुत है, हाँ उनके लिए तो जॉइंस हो बहुत है। गया, जॉइन हाँ लेफ्ट जॉइन, सारी क्वेरीज लिखना, हाँ ये सब तो आता था मेरे को। तब तो वही है, तो ये उनके लिए बहुत होता है। इतने में ही फंस जाते हो, सिंस यू न्यू हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं पावर बाई मॉडलिंग पढ़ लेते हैं, तब आगे चलेंगे। चलो लेट मी क्लोज एवरीथिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जब हम पावर बीआई में होंगे तो पावर बीआई में जैसे व्यूज हो गया, हाँ तो हमें मोस्टली तो हमें व्यूज ही मिलेंगे, टेबल तो कोई कोई भी नहीं देता क्लाइंट। तो नहीं बस, जो हाँ प्लीज गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। तो व्यूज में हम खुद ही क्रिएट करेंगे ना व्यूज को? डिपेंड करता है कि कैसा क्लाइंट है और सिचुएशन की। कुछ क्लाइंट होते हैं जो दे डू नॉट गिव परमिशन टू क्रिएट व्यू, वो खुद क्रिएट करके देते हैं। कुछ हैं मेरे पास जो क्लाइंट है वो बोलते हैं कि आप क्रिएट कर लो, वो रिक्वायरमेंट दे देंगे, डेटा दे देंगे आपको और व्यू बना लो, एक बार उनको डेटा दिखा देंगे, डेटा आ रहा है सही है गलत तो बता देंगे, देना आप कोशिश कर लो। बट डिपेंड करता है क्लाइंट को, अच्छा क्लाइंट बना के अच्छा, यानी कि कहने बनाना का पड़ता मतलब है है। सर, प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट हमें डेटाबेस का एक्सेस दिलवा देगा हमें, हाँ और उसके बाद बोलेगा कि डेटा यहाँ से पिक कर लो, तो हम टेबल्स को डायरेक्टली पिक कर सकते हैं हाँ वहाँ कर पे सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके बाद जब पावर बीआई डेस्कटॉप में आ जाएगा तो हम उसमें जो चाहिए होगा वो कॉलम्स को रखेंगे, और बाकी हमें तो कुछ जरूरत है ही नहीं। हाँ तो उसको हटा लेंगे अपने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। ओके ओके ओके, नहीं नहीं, फिर तो ठीक है सर, फिर तो हम पावर बीआई कर सकते हैं पूरा। एक्चुअली मैं दोनों सिस्टम पे ना ड्राइव मैंने एक ही रखी है, तो इस वजह से कहीं भी चला, इधर भी चल जाता है उसको दोनों पे चल जाता है। ठीक है, चलो ये तो मैंने बताया था आपके लिए। इसमें दो चीज़ें छूटी हुई हैं, एक क्या नाम है स्टोर प्रोसीजर कैसे इसमें ऐड करते हैं, और एक और है क्या नाम है नोटपैड प्लस मल्टीपल नोटपैड कैसे ऐड करते हैं वो चीज़। क्योंकि नोटपैड में बहुत सारे टाइप होते हैं, नोटपैड में आपको पता है डीडीएल फाइल तब तक होते हैं, तो वो नोटपैड कैसे ऐड करते हैं वो बता देंगे आपको, दो पार्ट है इसमें। पर चलते हैं मॉडलिंग पे, मैं इसको क्लोज ही करता हूँ, ओपन फ्रेश पावर। सर क्या है तो कोर्स में, क्या हम कि व्यूज को हम कैसे इसमें लेके आ रहे हैं, हाँ वही चीज़ वही बता रहा हूँ मैं। या फिर, या फिर तो ओके ओके वही ओके।
हाँ वही बता रहा हूँ आपको। बंद हो गया। चलो। फिर तो शायद से मेरे ख्याल से अप्रैल के मिड में ही खत्म हो जाएगा कोर्स। हाँ खत्म हो गया बिल्कुल। मुझे तो आधे सर के मुझे तो याद है सारी चीज़ें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ बंदे आते हैं 1 वीक से ज़्यादा, एक वीक से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं। सो नहीं, कुछ बंदे हैं यार, उनको मैं खुद सलाम करता हूँ, क्योंकि वही चीज़ मैंने सब जो आपको पढ़ा सबको पढ़ाई, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बंदों का ग्राफिंग पावर अलग होता है। ठीक है, सो वो जो इन्फोसिस में हुई लड़की, उसका अलग ही है, मतलब शी हैज़ अ ग्रेट कैप्चरिंग नॉलेज, तो वो अलग ही होता है, ग्रैप करने का बहुत अच्छी कैपेसिटी है। और प्लस जुनून जो होता है, जिन कुछ लोगों का जुनून होता है कि नहीं मुझे सीखना है ये, तो वो अलग ही चीज़ होती है। इसी कोर्स का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अपग्रेड मैंने देखा था कितने दिखा रहा है, 45,000। पता नहीं क्या है, लेंगे वो पढ़ाएंगे, ऑक्टोपस पढ़ा देंगे। और है तो बिल्कुल बेसिक ही, कुछ नहीं है उसमें, मैंने देखा। अच्छा, अपग्रेड वाले। हाँ अपग्रेड वाले, बस उनका नाम बिक रहा है, बिकने दो, चलो। ब्रांड दिख रहा है बस। हाँ वही है, कुछ नहीं। क्या पढ़ाएंगे? अच्छा बताओ, पावर में क्या पढ़ाएंगे? यही तो जो पढ़ा रहे हैं ये, और क्या कनेक्शन, क्या अलग से पढ़ाएंगे, क्या कुछ भी। अब आते हैं, मेरे पास सपोज करो डेटाबेस है, सो लेट्स क्रिएट द पैरामीटर। स्कूल पता नहीं किसका है, चलो कोई बात नहीं। मैं स्टार्ट करता हूँ स्कूल का। आपने कहा व्यू के लिए, सो व्यू मेरे पास देखिए है या नहीं, व्यू है तो इसमें सारा कुछ है। सेलेक्ट सेलेक्ट 1000। मैं डायरेक्टली लिख पहले दिखाता हूँ, तो हटा दो, स्कूल से नहीं लेते हैं। सेलेक्ट सर्वर नेम, सर्विस नेम नहीं, सर्वर नेम। ठीक है, कॉपी डायरेक्टली सर्वर नेम। कोई ले लो, किसका भी ले लो, बट मैं लेता हूँ इसमें व्यू का। ये व्यू, कोई भी ये ले लिया व्यू मैंने। ठीक है, सिंपल, जैसे आप टेबल लेते हो वैसे व्यू लेते हो, कोई डिफरेंस नहीं। ये व्यू का हो गया आपका, ये व्यू होगा। ठीक है, परफेक्ट। देन अब आते हैं स्टोर प्रोसीजर के लिए। कुछ नहीं, सिंपल व्यू है, जैसे इसमें वैसे स्टोर प्रोसीजर भी। स्टोर एसक्यूएल पे आएंगे, टाइप करेंगे सर्वर नेम, डेटाबेस नेम। बट हाँ, स्टोर प्रोसीजर के लिए थोड़ा सा अलग ये है कि उसका पैरामीटर पास करना होगा। और पैरामीटर देखते हैं क्या है इसमें। मुझे इसका पैरामीटर देखना होगा। पैरामीटर क्या लिया है मैंने यहाँ पे, एक्चुअली किसी किसी चॉइस का लिया है मैंने, गेट एम्प्लॉय आईडी। ये चलता नहीं है इसमें। ठीक है, सही है, ये चल रहा है। कौन सा चल रहा है ये? बिजनेस आईडी 2 कहाँ पे? यूएसपी। सर ये गेट मैनेजर प्रोडक्ट आईडी से पहले है, हाँ ये सही है, प्रोडक्ट आईडी से पहले इससे ऊपर, इससे ऊपर ऊपर। वाला, ये है। बाकी सारे चल नहीं रहे पैरामीटर, इसी को लिया था मैंने, ढूंढना पड़ा। सो सिंपल है, ये तो एग्जीक्यूट करना जानते ही हो। कॉपी किया इसको, बट हाँ बनाने से पहले आप पैरामीटर इस पे एसएसडीटी पे पास कर लोगे, चाहे चाहे वर्कबेंच पे चाहे इस पे, दोनों पे पास करके ही ले जाओगे पावर बीआई में। और जो डेटा सेट आपका है उसका कनेक्शन पास करो, यहाँ पे यूज करो, एज इट इज चल जाएगा। सो एसक्यूएल सिंपल एसक्यूएल है, कुछ अलग नहीं है इसमें।
then we have the server name and database name. इसमें तो जस्ट पास इट, नथिंग एल्स, सेम वे जैसे डेटाबेस में वैसे यहाँ पे भी कुछ Okay. हाँ तो तो इजी है। इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डर है उसको खत्म कर दो। अच्छा, अब क्या हुआ कि चलो आपने इतना तो कर लिया, आपने टेस्ट किया, चलो बट मुझे क्या करना है, मुझे इसमें नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे दूसरी किसी पीबीएक्स में ले जाना है। तो क्या मैं सारा प्रोसेस दोबारा करूँगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं दोबारा करने की। एक तरीका बताता हूँ आपको मैं। देखिए ये व्यू है आपका जो पीबीएक्स है, मैं उसमें मूव कर रहा हूँ। ये आपका डे 1 है, इसमें मैंने स्टोर पोजीशन नहीं क्रिएट किया, आप देख लो, नहीं है इसमें। मैं क्या करूँगा, लेट्स कम टू द हियर एंड व्यू एसक्यूएल, क्लिक ऑन इट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये इसका एडवांस एडिटर है। और देखो पावर बीआई जो बैकग्राउंड में काम करता है इसको पावर क्वेरी बोलते हैं। पावर क्वेरी जो चलता है वो चलता है एम लैंग्वेज पे, रिमेंबर एम लैंग्वेज, और एम लैंग्वेज डैक्स की कंपेयर में बहुत फास्ट होता है, इतना समझो आप। यानी अगर आपको 2+2 कैलकुलेट करना है तो पावर बीआई जो डैक्स लेगा वो 3 मिलियन सेकेंड लेता है, और ये लेता है लेस देन 1 मिलियन सेकेंड लेता है। क्या डिफरेंस है? सो अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आएंगे न्यू पे, ब्लैंक क्वेरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एसक्यूएल व्यू, एंड देन इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे एडवांस एडिटर पे, कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे एज इट इज, डन। और आपका डेटा जो वहाँ था अब यहाँ आ जाए आपके फाइल में, ठीक है। नेक्स्ट स्टोर प्रोसीजर की बात करते हैं। अब मैं आ गया स्टोर प्रोसीजर, इस पे इसको क्लोज किया मैंने, क्वेरी 2 पे आ गए, ये मेरा स्टोर प्रोसीजर था एसपी, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कर लिया, क्लोज किया इसको। अब डे 1 पे आएंगे, यहाँ भी हमने ब्लैंक ऐड करना है यहाँ पे, तो ब्लैंक ऐड कर दिया, देन इसको दिया एसपी अंडरस्कोर एसक्यूएल, एंड देन इसको पास कर दें यहाँ से। अच्छा, यहाँ एक चीज़ है कि देखो, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस नहीं मारा है, वर्कबेंच नहीं मारा है, तो ये आप जैसे ही पास कर दोगे यहाँ पे पैरामीटर, मैं यहाँ पे पैरामीटर पास किया होगा, मैंने दिखा रहा हूँ आपको, सर्वर नेम डीबी नेम, अब मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करूँगा, सर्वर नेम एंड देन टीवी नेम, परफेक्ट चल गया। यहाँ पे देखो क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ दिस वेरिएबल पास हो गया, सब कुछ सेम है, बस वेरिएबल पास हो गया। तो इससे आपका एक चीज़ है कि आपके लिए बेनिफिट होता है, तो हमेशा यूज करो इसको आप हमेशा, ठीक है। और कोई डेटाबेस अगर जानना चाहो तो 2 चीज़ छूटी थी, वो 2 चीज़ मैंने आपको बता दी। इसका ये लिंकिंग प्रॉस्पेक्ट, चाहे इसको ट्राई करो। अब जो पार्ट आएगा वो आएगा डैक्स वाला, और क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये मेजर पार्ट होता है इसका, एंड आई थिंक आज के लिए रन देते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोबेबली आपका मुझे नहीं लगता कि 10 अप्रैल जाएगा, उसके पहले हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके सही। अब सर हमें इसमें अब हमें और क्या क्या सीखना है, मतलब 2 चीज सीखनी है, हमें डेक्स सीखना है और पावर क्वेरी सीखना है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है, विजुअलाइजेशन सीखना है आपको, और डैक्स, विजुअलाइजेशन डैक्स 2 चीज़ बची है, और ट्रांसफॉर्मेशन 3 चीज़ें मेजरली सीखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद से पाइथन आपको कैसे लिंक करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आपको बता देंगे, ठीक है। सो आपके बस अब आप एक काम करो यार, आप मुझे सीवी दो, क्योंकि सीवी नहीं दोगे तो फिर आपको लेट होगा, ठीक है। सो अगर आप कहो तो मैं सीवी अपना देता हूँ, आप उसको अपडेट करो, ठीक है। और नौकरी पोर्टल पे जाने के लिए आपको फ्यू कीवर्ड है जो कि इंसर्ट करना पड़ेगा, विच इज़ पावर बीआई डेवलपर, पावर बीआई इंट्रोड्यूस इन पावर बीआई एक्सपीरियंस। मतलब जो सीवी आप दोगे ना, सीवी बनाओगे, उसके टाइटल में ऐसे लिखोगे आप,
लेट मी सर उसके लिए तो अभी मेरे को थियोरेटिकल जो होगा वो उसकी भी तो प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं, डरने की जरूरत थियोरेटिकल नहीं। का आप क्वेश्चन आप सुनो, इंटरव्यू देना मत, इंटरव्यू शुरू करो, इंटरव्यू दिल्ली मत करो, आपको जितना आ रहा है उतना सफिशियंट है। मैंने जो पढ़ा है, जैसे एक सेशन हो जाता है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट सेशन मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा कि सैटरडे की पहले मैं आपको सेशन ले लूँ। वेडनेसडे थर्सडे तक मैं सोच रहा हूँ कि फ्राइडे को सेशन ले लूँ मैं आपका, और मंडे आप इंटरव्यू देना शुरू करो। क्योंकि देखो, इंटरव्यू दोगे, क्वेश्चन आएंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व, मेरी जिम्मेदारी सॉल्व कर। मैं चाहता हूँ जब तक आपका क्या नाम है कोर्स कंप्लीट हो 10 तारीख तब तक पहले आप जॉब पा जाओ, मेरा ही मन है, ठीक है। सो गिव मी द सीवी। अगर अपडेट नहीं, या तो सीवी आप ले लो मुझसे मेरी, या तो आप अपडेट करो अपनी सीवी। मुझे हर हाल, तो अपडेट आज करना नहीं पड़ेगा। नहीं, मुझे सुना, हर हाल में मुझे कल तक आपका सीवी अपडेट चाहिए मुझे। ये ले लो आप मुझसे, डिले सर मत। कोई ऐसा कोई फॉर्मेट हो तो वो दे दो सर, मैं वो उससे थोड़ा कर लूंगा उसमें हाँ, एडजस्टमेंट्स। वही वही चीज़ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, वही चीज़ देख रहा हूँ। क्योंकि देखो, पढ़ने से ठीक है, चलता रहेगा, पढ़ाई चलती रहेगी, बट हाँ, हमें डिले क्यों? हमारे हम लोग करियर में कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था हमें। ऐसा नहीं कि नहीं आती चीज़, बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। टाइम बीत गया हमारा, आप नहीं मानोगे, मुझे कोई बताना नहीं था। मुझे करीब 10 साल बाद पता, मैंने 5 साल नौकरी के बाद पता लगा कि पावर भी स्कूल कोई चीज़ होती है। अगर मुझे वो चीज़ें पहले पता होती तो शायद हम लोग और आगे बढ़े होते और आगे गए होते। तो वही चीज़ें हैं, डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। देखो, मैंने एक चीज़ सीखा है मैंने, कि जैसे आप जो पढ़ते हो, ये लेट मी क्लोज यार, लेट मी